Few days back, I bought the new DJI Osmo 4 action camera, and since then I was looking for a good mount to capture good POV shots. I was looking for a mount which I can wear around my neck because I didn't like wearing the chest mount, and something which I can easily put on and take off in a few seconds. So I went onto the internet, opened Amazon, and found this one. Telesin magnetic POV neck selfie holder vertical mount kit, hands-free video, vlog necklace lanyard body strap, attachment for GoPro Max Hero, Insta360, DJI Action, iPhone, Android. Quite a big name. And since I had used Telesin products, I wanted to test it out. So I went ahead and purchased it, and this is what I received the next day. सो ये है हमारा टेलीसिन का मैग्नेटिक पीओवी निक सेल्फी होल्डर वर्टिकल माउंट किट। काफ़ी लंबा नाम है एंड पर्टिकुलरली मैं इस एक्सेसरी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अमेज़ॉन से ये मुझे आज ही मिला है, येस्टरडे एंड ऑर्डर्ड, सो वेरी फास्ट डिलीवरी बाय अमेज़ॉन। ये है इसका कंप्लीट बॉक्स पैक, अच्छा पैकेजिंग हुआ है। बॉक्स को जल्दी से ओपन करते हैं एंड देखते हैं कैसा है हमारा नेक माउंट। बॉक्स को ओपन करने के लिए आई हैव माई सीजर्स। सो पैकेज के अंदर से निकला है हमारा बॉक्स पैक। ऊपर में टेलीसिन का लोगो लिखा हुआ है। दिस इज़ अ एक्सेसरी प्रोडक्ट फ्रॉम टेलीसिन। टेलीसिन का काफ़ी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ किया हूँ एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग इट करेंटली। ट्राईपॉड्स, एक्सटेंशन रॉड्स, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स उनके होते हैं। ऊपर में नेक बैंड का पिक्चर दिया हुआ है एंड दिस इज़ हाउ यू कैन अटैच योर GoPro एक्शन कैमरा। साइड में टेलीसिन का वेबसाइट in on both side and again Telesin का logo on the other side and पीछे few information price दिया हुआ है। So the MRP given is 4,990. I purchased this product from Amazon at 1,500 rupees. So normally MRP काफ़ी ज़्यादा रहता है and उस प्राइस में कोई नहीं खरीदता। It is always discounted. अभी बॉक्स को ओपन करते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या एक्सेसरीज निकलता है। सो फर्स्ट इज़ एन यूज़र गाइड, इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों में लिखा हुआ है एंड इट शोज़ कैसे आपको इसको यूज़ करना है एंड कैसे इसको कैमरा में माउंट करना है विथ द पिक्चर्स। सो दिस इज़ नाइस। इसको रखते हैं अभी साइड में। दो एक्सेसरीज दिए हैं जिससे आप अपना एक्शन कैम लगा सकते हैं एंड दिस इज़ आवर मेन यूनिट। क्वालिटी सिम्स क्वाइट नाइस, थोड़ा वेट भी है इसका एंड दिस मटेरियल इज सिलिकॉन, ग्रे कलर में ही आता है एंड इट इज़ लुकिंग रियली नाइस। काफ़ी स्मूथ टेक्सचर है एंड इट्स सिलिकॉन, सो काफ़ी अच्छा ग्रिप है। यहाँ पे टेलीसिन का लोगो भी लिखा हुआ है। द बॉक्स सिम्स लिटिल ओल्ड, थोड़ा पुराना लग रहा है। लेट्स सी अगर अंदर कुछ है तो। एंड दैट्स ऑल, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स। बॉक्स को रख देते हैं साइड में बिकॉज वी डोंट नीड इट। सो दिस इज़ आवर नेक बैंड। इसको जैसे चाहो आप ऐसे मुड़ के लगा सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा ऑड लगता है, व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट इट इज़ वेरी नाइस। इसको आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ही आप एडजस्ट करना चाहते हो ये वैसे ही एडजस्ट हो जाता है। ऐसे आपको ये पहनना होता है, ये ऐसे क्लिक करके लग जाता है एंड ये बहुत टाइट है, ये नहीं खुलता। यू कैन प्रेस दिस बटन इफ़ यू वांट टू ओपन इट। इसको आप प्रेस करते हैं, ऐसे आप इसको ओपन कर सकते हैं एंड व्हेन यू वांट टू अटैच इट यू कैन अटैच इट लाइक दिस। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें यूज टू होने के लिए एंड दिस इज़ हाउ यू कैन स्टिक योर GoPro और एनी अदर माउंट्स। तो इज़ एन एडिशनल एक्सेसरी, ये मुझको नहीं चाहिए बिकॉज आई ऑलरेडी हैव दिस। This is how you open the neck mount and wear it around your neck by using the back button to open the lock of the neck mount. This is how you attach your action camera with the neck mount by removing the magnetic clamp and sticking your action camera in the clamp
and then putting it back on. So recently I purchased this DJI Osmo action camera. इसको अभी इसमें लगा के देखते हैं कैसे ये लगता है. And this is how you can stick it. This is a very good alternative to the chest mount जो कि एक्शन कैम के लिए होता है. चेस्ट माउंट काफ़ी टाइट होता है and I feel very uncomfortable wearing it. This is a much better option. दोनों ही सेम फील्ड ऑफ व्यू आपको देगा when you are using your action cam, and it will be hanging on your neck like this, and you can easily adjust the tilt. अगर आपको ऐसे करना है, आपको थोड़ा ऊपर करना है, in fact you can also adjust the neck band also, which is very good. And अगर आपको जब ये neck से उतारना है, you just click the back button and easily आ जाएगा. And आपको जब लगाना होगा, then also you can easily slide it and it will be locked. तो ये जो है ये बहुत अच्छा ग्रिप देता है, ये एकदम खुलता नहीं है. So this is a very nice accessory, very good alternative to chest band. In fact, if you are using a chest mount for mounting your action cam, you should try this. This will be much more comfortable, much easy to put it on and take it off, and much easy to use. अभी mostly वीडियो में मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, so I needed it. I have purchased it from my own money. It costed me 1500 rupees, and I find it very useful to my need, and I think it will be a great addition to my collection. This is a short demonstration of how to open the neck mount and how to put it around your neck. Whichever method suits you, you can follow it. After using the mount a few times, you will get used to putting on and taking off the neck mount. This is how the neck mount looks on me. I will share a few photographs at the end of the video showing how the neck mount look on me, and also I'll record few videos and put it at the end of the video about how good the performance of the neckband is and how good the recording from the neckband while using it. So ये था हम लोग का unboxing and first look of the Telesin neck mount for action camera. वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए. If you like the video, hit the like button. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please hit the subscribe button and share the video with your friends. See you soon in our next video. Till then, take care and goodbye.